आज की वीडियो थोड़ी सी डिफरेंट है क्योंकि आज हम आउटफिट्स के बारे में बात नहीं करेंगे। आई जस्ट वांट टू टॉक अबाउट हाउ यू कैन एलिवेट योर लास्ट मिनट आउटफिट्स फॉर फेस्टिव सीजन, वेडिंग सीजन। कैसे आप छोटे छोटे एक्सेसरीज, कुछ हल्के हल्के चेंजेस करके अपने आउटफिट्स को बहुत अमेजिंग बना सकते हो। सबसे पहले invest in a red lipstick and you are not going to regret it, whether it is festive season, whether you have to attend a party, whether it's wedding season। रेड लिपस्टिक्स तो हमेशा बहुत काम आती हैं, स्पेशली आई थिंक फेस्टिव सीजन के राउंड तो ये बहुत अमेजिंग लगती हैं। ये वाली जो लिपस्टिक है, दिस इज फ्रॉम के बाय कटरीना इन द शेड एक्शन एंड दिस इज द वन दैट आई हैव ऑन राइट नाउ। I really like it. Now if you have cool undertones, so you can go for a more cool shade red. If you have warm undertones, to go for like maroon या थोड़ा सा कोई warm brick red kind of shade. तो just decide on that depending on your undertones. But एक red lipstick में invest करो which suits you and it is going to change the game for you. Second, मैं आपको एक बहुत important styling hack बताती हूँ, which is the balance between your outfit and makeup. तो अभी जैसे दिवाली भी 2-3 दिन बाद है एंड आपको लग रहा है कि आपका आउटफिट बहुत प्लेन है या फिर आप कुछ अपना पुराना रीवेयर करना चाहते हो, बट यू वांट टू जस्ट डू समथिंग डिफरेंट इन इट, यू कैन प्ले अराउंड विद योर मेकअप. If you have a plain outfit going on, then go for heavy makeup, and if you have a very heavy outfit, go for थोड़ा minimal kind of makeup. जिस भी चीज में आप attention grab करना चाहते हो उस चीज को heavy रखो. तो अगर आपको लग रहा है कि आपका outfit plain है, you don't want attention there, play with your makeup, maybe go with red lips, do something with your eyes. And अगर आपको लग रहा है कि आपका outfit is something that needs to shine, then go for more minimal makeup that will complement your outfit. Third thing, सिंस अभी पूरा 1-1.5 महीना शादी चलेगा, फेस्टिव सीजन चल रहा है, दिवाली आने वाली है, मेक श्योर यू आर पेइंग अटेंशन टू योर नेल्स एज वेल. आउटफिट में हम पूरा ध्यान देते हैं, मेकअप में हम ध्यान देते हैं, बट हम अपने हैंड्स को, अपने नेल्स को स्पेसिफिकली भूल जाते हैं. आई थिंक विच इज वेरी रॉन्ग. लाइक यू कैन चूज एनी कलर दैट यू लाइक. इट कैन बी न्यूट्रल, इट कैन बी वाइट, इट कैन बी न्यूड, इट कैन बी समथिंग एज सिंपल एज जस्ट लाइक फाइलिंग योर नेल्स, कीपिंग देम क्लीन एंड उसके ऊपर एक क्लियर टॉप कोट लगा लो, बट pay attention to your nails as well. Tip number 4, something very important. I think one of the most important tip of this video is, wait for it, hair accessories. Invest in a few hair accessories and you are not going to regret it, and it's going to make hair styling very easy. सबसे पहले तो invest in a couple of these scrunchies, like super big scrunchies, especially if you have short hair like me and if you also like to do like sleek bun या फिर bun of any sorts, क्योंकि I think Indian wear में ना bun सबसे amazing लगते हैं, especially like थोड़े से low bun, they look so cute. Number 2, invest in this. भाई ये तो मैं बोलूँगी अभी खरीद लो. So I got these gajras, like fake gajra scrunchies kind of from Amazon. ये set of 2 था for 200 rupees. Best 200 rupees I've ever spent. And they literally smell like a gajra. इसमें ना इन्होंने वो स्प्रे किया हुआ है, वो फ्लावर की स्मेल, एंड ये इतने ज़्यादा अमेजिंग स्मेल करता है ना, तो लग रहा है सच में गजरा ही पहना हुआ है. एंड देन my favorite things are these fake flower pins, like roses basically. तो मैंने ना अलग अलग कलर्स में लिया. I've got yellow, I've got tons of red, I've got pink and white, I've got white, I've got pink, I've got golden. तो ये मेरे बहुत सारे कलर्स में. I have multiple of these, but sometimes I just want to put 1 rose, sometimes I want to put 3 roses. तो ये रेड वाला मैं सबसे ज़्यादा यूज करती हूँ बिकॉज आई थिंक ये सबसे सुंदर लगता है. नाउ सिंस वी आर टॉकिंग अबाउट हेयर स्टाइल्स, यू नीड टू हैव मैनेजेबल हेयर टू मेक दोज हेयर स्टाइल्स. अगर बाल बहुत फ्रिजी, बहुत रफ फील हो रहे होंगे तो हेयर स्टाइल्स बनाना भी बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा, एंड हेयर स्टाइलिंग इन जनरल काफी डिफिकल्ट हो जाएगा. And for this, I have a very good product. So let's take a mini sponsor break. That was so smooth, right? So today I'm working with bblunt once again for this part of the video, and I want to talk about their hair mask. मुझे इनकी पूरी hair care range काफी पसंद है, but I specifically love their hair mask a lot. And I especially want to talk about their intense shine hair mask. This hair mask is amazing. You can already see मैंने ये product कितना ज़्यादा use करती हूँ. इसमें rice, silk protein और shine tonic है, जो आपके बालों को smooth बनाता है, shiny बनाता है, and makes them stronger as well. What I really like about these products is that specially crafted for Indian hair. इसको use करना बहुत ज़्यादा easy है. As I said, instead of using like a conditioner after my shampoo, I like to use like a very generous amount of this hair mask. आप देख लो मैं कितना ज़्यादा product use करती हूँ, and इसके बाद मेरे बाल इतने ज़्यादा shiny, manageable हो जाते हैं. Now they also have this intense moisture hair mask. This moisturizes and nourishes your hair and adds salon-like shine.
The third hair mask that they have is this Intense Moisture Heat Hair Spa Mask. This has jojoba oil and vitamin E जो कि बहुत nourishing ingredients होता है. So you can see this product is divided into two parts actually. ये step 1 है, ये step 2 है. तो यहाँ पे है हमारा main hair mask and it comes with a सेल्फ हीटिंग कैप जो कि मुझे काफी यूनिक चीज लगती है एंड ये काफी बेनिफिशियल भी होती है. सो लाइक ऑल ऑफ दीज प्रोडक्ट्स एक्चुअली आर रियली अमेजिंग. इफ यू वांट टू परचेज देम मेक श्योर यू यूज माय कूपन कोड Dikshita2023 for 20% off on bblunt's official website. These products are also available on Nykaa, Flipkart and Amazon. तो आप वहां से भी खरीद सकते हो. And bblunt has this really good initiative going on where every time you purchase from them they will link your order to a women they are empowering through Samba Foundation. So another great reason to support them. And now let's move on with the video. एक और चीज मैं बहुत ज्यादा यूज करती हूँ. It is something very 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 small but इतना मेजर डिफरेंस लेके आती है ना ये आपके फेस में. एंड yes you have guessed it correctly, it's बिंदी of course. तो सबसे पहले of course you need black बिंदी एंड ये अगेन इतनी सस्ती चीज है. आपको ये 10, 20, 50 रुपए में कहीं पे भी मिल जाएगी. किसी भी लोकल मार्केट में मिल जाएंगी. जस्ट गो टू योर नियरेस्ट लोकल मार्केट एंड गेट लाइक अ फ्यू बिंदीज के पैकेट्स. तो ब्लैक मेरे पास 3 डिफरेंट साइजेस में है. नेक्स्ट आई हैव दीज छोटे साइज में कलरफुल बिंदीज एंड इसमें बहुत क्यूट से कलर्स हैं हियर. तो कभी कलरफुल से पहनने का मन कर रहा है एंड आई एम एक्चुअली रियली इनटू कलरफुल बिंदीज दीज डेज. सो बेसिकली आई एम ऑब्सेस्ड एंड आई हैव अ लॉट ऑफ बिंदीज. एक और हैक बताती हूँ. सो अगर आपके पास बिंदी नहीं है या फिर टेल मी इफ यू रिलेट टू दिस और आपके साथ भी ये हुआ है बट लास्ट मिनट जब कहीं जाना है तभी बिंदी नहीं मिलती. क्योंकि मेरे साथ ये इतने बार होता है कि आई हैव टू रश समवेयर और मैं भूल जाती हूँ कि मैंने बिंदी कहाँ रख दी. बिकॉज तो छोटे छोटे पैकेट्स होते हैं एंड समटाइम जस्ट कीप देम एनीवेयर एंड फॉरगेट अबाउट इट. तो मैंने कितने बार मेरे साथ ये हुआ है. तो मेरे साथ बहुत बार ये हुआ है एंड तब मेरा हैक होता है टू जस्ट टेक एन आईलाइनर एंड मेक अ बिंदी आउट ऑफ इट. अनदर मस्ट हैव, आई थिंक दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट आइटम दैट यू नीड टू इन्वेस्ट इन आर बैंगल्स AKA चूड़ियाँ. एंड मैं सही बता रही हूँ एट दिस पॉइंट आई एम obsessed. You don't understand. I have a problem. Now you of course don't need like 15 different colors में चूड़ियाँ but I will say invest in a few colors. सिल्वर और गोल्ड तो डेफिनेटली रखना है एंड देन गो फॉर अ फ्यू पॉप ऑफ कलर्स जैसे पिंक कलर की, येलो. लाइक दिस इज समथिंग दैट गोज विद एवरीथिंग. अगर आप पिंक में पिंक पहनोगे अमेजिंग लगेगा बट अगर आप येलो में पिंक पहनोगे वो भी बहुत क्यूट लगेगा बिकॉज येलो और पिंक भी काफी अच्छे लगते हैं साथ में. रेड में रेड पहनोगे अमेजिंग लगेगा बट रेड के साथ ग्रे भी बहुत सुंदर लगता है. तो यू कैन जस्ट मिक्स एंड मैच. या फिर अगर आपके आउटफिट में मल्टीपल कलर्स है तो आप उनमें से कोई भी एक कलर चूज के उसकी चूड़ियाँ पहन सकते हो. सो यू कैन लाइक स्टार्ट बिल्डिंग योर चूड़ी कलेक्शन. आई वॉन्ट एवरीवन टू बिल्ड अ गुड चूड़ी कलेक्शन बिकॉज दे आर सो क्यूट एंड आई लव द साउंड ऑफ कांच की चूड़ियाँ. दैट इज द परफेक्ट ASMR फॉर मी. नेक्स्ट स्टाइलिंग टिप इज एक्चुअली समथिंग जो कि बहुत मेजर डिफरेंस लेके आता है आपके आउटफिट में एंड ये चीज मैंने मल्टीपल टाइम्स नोटिस कर लिया विद माई सेल्फ. लाइक व्हेन आई एम स्टाइलिंग माई सूट सेट्स, माई lehengas, I have seen this a lot, which is draping off your dupatta. Now we all like being basic bitches. I get that. वो side वाला draping is the most easiest to do, but try to play around with the draping because I've noticed कि यार वो सच में बहुत ज़्यादा डिफरेंस लेके आता है. Even if you're wearing something super simple सा जिसमें आप बस दुपट्टे की ड्रेपिंग चेंज कर लो ना, उसी से आपके आउटफिट में से लगता है कि अच्छा ठीक है यू हैव पुट इन एफर्ट्स एंड दैट्स व्हाट वी वांट. मिनिमल स्टेप्स से अगर आउटफिट अच्छा बन सकता है तो क्यों ना बनाए. सो यू कैन गो फॉर योर बेसिक साइड ड्रेप और यू कैन डू वन ऑफ माई फेवरेट ड्रेप विच इज लाइक अ केप स्टाइल. एंड कभी मुझे लगता है कि अच्छा आउटफिट बहुत प्लेन लग रहा है फिर ठीक है वो उम्फ फैक्टर नहीं आ रहा, उतने मजे नहीं आ रहे. आई जस्ट प्ले अराउंड विद द ड्रेपिंग एंड इट वर्क्स 100% of the times. Lastly, I want to talk about a few products that I think kind of are like festive season के लिए must haves. First one is a good perfume. Of course, we need to smell good. This is my current favorite perfume. It's from Kayali and it's their Vanilla 28. It smells heavenly. Also, I think something that you really need during wedding season, festive season, especially if you have to attend any daytime event, are blotting sheets. वेरी बेसिक आई नो बट दिस इज समथिंग जो बहुत लोग ओवरलुक कर जाते हैं स्पेशली इफ यू हैव ऑयली स्किन एंड एज आई सेड इफ यू हैव टू अटेंड लाइक एनी डे टाइम फंक्शन यू कैन वेरी इजीली यूज इट ओवर मेकअप. कोई दिक्कत नहीं होती, इससे मेकअप शिफ्ट नहीं होता. एंड देन लास्टली
a very important product that every girl should have is fashion tape. Fashion tapes बहुत ज़्यादा यूजफुल होते हैं ऐसे लास्ट मिनट चेंजेस वगैरह में, या फिर लास्ट मिनट इफ यू वांट टू जस्ट सिक्योर एनीथिंग, एक्चुअली दे आर सुपर डुपर यूजफुल. सो यू कैन फाइंड देम Amazon में, आपको बहुत सारे मिल जाएंगे. अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज गिव इट अ बिग थम्स अप. एंड अगर आपको अपनी ओर से कोई भी स्टाइलिंग टिप, कोई भी हैक, कोई भी फेस्टिव सीजन या वेडिंग सीजन के लिए ट्रिक्स वगैरह ऐड करनी है इन द कमेंट सेक्शन, प्लीज फील फ्री टू डू सो, बिकॉज आई थिंक कि बाकी लोग को यूजफुल ही लगेगा वो, एंड इवन आई माइट गेट सम आइडियाज फ्रॉम यू. सो या डू लेट मी नो दैट इन द कमेंट सेक्शन. वीडियो पसंद आई तो प्लीज 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 लाइक करना, सब्सक्राइब किए बिना तो बिल्कुल मत जाना, and share this video with your friends. Maybe this will be useful for them as well. And I hope you will have a very good Diwali, क्योंकि अब हम दिवाली के बाद ही मिलेंगे with maybe some wedding season related video. Let's see. But yeah, I hope you enjoyed watching it, and I'll see you next time. Bye. So where you wanna go? Let's see it all. Selfies on the Great Wall, maybe the Taj Mahal. Hey, we could stay out late after dark. Take a gamble in Monaco. We could swim with the sharks.